difficult to recognize. Are we coming in the middle? No, no, no. You are good. Same as last year. क्या हो गया 11 मात्रा का खत्म हो गया नमस्ते मोटा फ्रेंड्स आजचा कार्यक्रम आम्ही आता सुरू करत आहोत वी आर ब्लेस्ड टू हॅव वन ऑफ द मोस्ट prolific कथक dancers of India, a fine actress in Marathi and Hindi cinema, best actress awardee from the state of Maharashtra, successful writer, director, producer of Indian series, TV serials, the list goes on and on. One and only Archana Taidul. I don't mind holding the mic in my hand. फक्त परफॉर्म करायचं झालं तर माईक Yes. हातात नको. देऊ. हा I'm fine either. ही थोडी अपराईट खुर्ची नाही का असेल हे सगळे बसले तशी. मला खड्ड्यात Yeah, that's better. Actually, these Good. keeps your back upright. Friends, this is part one of the two-part series. Archana Zoglekar, the artist, we will do today, and Archana Zoglekar, the person, which we will be doing tomorrow. मी मराठीमध्ये बोलेन, हिंदी में कोशिश करेंगे. माझं हिंदी वो दूध में पानी डाले होगे. संभाल लीजिए. And I will also speak in English. We have a mixed crowd in the house today. I will also request Archana Tai, Archana Didi, Archana Ji, to follow whatever language उनके दिल में उभरा है. We will be all ears, regardless of the language. In this regard, to quote and little bit paraphrase विनोद कुमार शुक्ला जी, हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, किंतु साथ चलना जानते. हे काही तसंच. We are here to listen, to see, and to learn about Pandita Archana Zoglekar, हे विदुषी. टाळ्या वगैरे वाजवलं तर चालतील. So this will be some sort of interview, informal gappa, discussions, live interactions with you all in the audience, Q&A, etc. I'll be moderating this from the stage here. My partner in crime, Asmita Modak, will be moderating from the house. At the end, we will open to you all in the audience for Q&A as well. So today, Archana Zoglekar, the artist, about her dance journey, learnings with her Gurujans, anecdotes of her performances and her collaborations. Tomorrow, Archana Zoglekar, the person, about her childhood, to her journey in theatre and film industry, and beyond. So let us begin today's session. Archana Tai, with your permission, Archana Zoglekar, the artist. That's good. So my first set of questions. Archana Tai, what is your very, very first memory of Kathak? पहिल्यांदा कथकची जाणीव तुम्हाला कधी झाली, व त्याच्याबद्दलची एखादी आठवण. And then like learning dance from the childhood, and of course learning with your first guru, Asha Tai Zoglekar. So if you can expand on that, starting with your really first memory of Kathak. To be honest, since I'm walking, I'm dancing. Because my mother, she founded Archana Nrityalaya when I was few months old. And so even before I would know what am I doing, I was learning Kathak. And I vividly remembered the first Kathak performance. I mean, I was not at all taken seriously. I was some 3-year little something. And that was the annual show of our Archana Nrityalaya. And that was in Chandrapur. Chandrapur is a small town place next to the Nagpur on the eastern part of Maharashtra. That's where she founded Archana Nrityalaya. And so
I mean, in the same year when I was born, and within 3 years, the academy had grown up enough that she could put up an annual show. And थोड़ा हिंदी में भी mix करती हूँ. I know many are Hindi siders. Raise your hands. Yeah. So stay with the राष्ट्रभाषा. And तो वहाँ जैन टॉकीज नाम का एक मूवी थिएटर था. तो जैन टॉकीज के जो ओनर थे, उनका नाम था जयंत मामिडवाल, और उन्होंने जैन टॉकीज के थिएटर में हमारा एनुअल शो हुआ. And even to date, there is a puja dance, a choreography, which we necessarily teach all the beginners and the newcomers. In a way, introducing them to our culture, कि पूजा कैसे की जाती है, चंदन कैसे बनाया जाता है, हल्दी और कुमकुम कैसे भगवान को लगाया जाता है, माला कैसे बनाई जाती है, इस सारी मुद्राएं और क्रियाएं इस पूजा नृत्य में हैं. और मुझे अभी भी याद है कि पूरा स्टेज भरा हुआ था और मैं एकदम पिछली लाइन में कहीं तो कॉर्नर में एक छोटा सा कॉकरोच उधर बैठा हुआ था. एंड आई डांस्ड. सो दैट वाज माय फर्स्ट कथक परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 3. And as I said, I was not at all taken very seriously. But when I was 6, that is the time our family shifted to Mumbai because मेरे पापा की transfer हो गई. He was working with the central government. And when we were in Chandrapur, he was working for the defense. And then he was transferred to the housing board in Mumbai. And so our family came to Mumbai. And जैसे ही हम Mumbai आए तो the first thing my mother did, she was not the kind of person to open her mouth and speak quickly. She was a very quiet person, and I'm exactly opposite of her. And first time my mom, she said to my Baba that now that we have come to Mumbai, I want to learn from Gopi Krishna. And अब तो सारा GPS है, ये है, वो है. There was nothing. I mean, at that time we didn't have even the phone at home. So just imagine कैसे उसने ढूंढ के निकाला होगा कि गोपी जी कहाँ रहते हैं, कौन से रास्ते पे रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है. I don't know. I'm still now, when I think about it, I'm really curious that what source she must have, कितना digging किया होगा to find out कि वो कहाँ रहते हैं. And she started learning from him. हम लोग अंधेरी में रहते थे, अंधेरी वेस्ट. गोपी जी खार वेस्ट में 16th रोड खार डंडा रोड पे. आज भी नटेश्वर भुवन उनकी मतलब बंगला आज भी वहाँ है, लेकिन अभी वो माहौल बदल गया, वो नहीं है. बट उस समय अंधेरी DN नगर जहाँ हमारा घर था, वहाँ से अंधेरी स्टेशन बस लेके जानी पड़ती थी because it was not such a short distance, it was not a walking distance. And उस समय एडल्ट टिकट 10 पैसे का था और चिल्ड्रन टिकट 5 पैसे का. एंड फिर वहाँ से उसका ट्रेन का पास था, वो पास से ट्रेन से अंधेरी से खार जाती थी. फिर वहाँ से कम 1-1.25 मील कम से कम माइल का रास्ता था. सो स्टेशन से भी वो पास नहीं था, बट उस पर फिर से बस पे खर्चा करना was too much for her. So she used to walk. And likewise, after the class, after dancing, she used to walk back. And whenever she would sit in the, or even standing in the train, all the time, जो भी सीखा है, उसी का अध्ययन करना, उसका ही चिंतन मनन करना, यही उसका चलता था. And one thing she realized, as I said, that time there were no tape recorders. Forget about the mobile phones and nothing. Means लिखना और याद करना. That was the way. And one thing she had realized, she had noticed even when I was a little baby, that I was super good in memorizing. My grasping was blotting paper की तरह, मतलब डाला कि गया भेजे में, ऐसे था. And to the contrary, उसे याद रखने में time लगता था. She used to make a lot of efforts to memorize or remember things. And that's why when she realized कि ये जो अपना छोटा सा पपलू है, ये अच्छा याद रखता है, तो वो जैसे ही क्लास से आती थी, मुझे पकड़ के जो भी सीखा होता था वो मेरे दिमाग में ठूसती थी. And eventually, मतलब she used to call me her cassette. So I was her cassette. And literally, मतलब आज भी किसी भी ताल का, किसी भी तोड़ा, कोई भी कोरियोग्राफी का कोई भी हस्तक किसी भी बीच में चाहिए हो, तो जैसे हम लोग एग्जैक्ट वो बटन दबाते हैं और वो शुरू हो जाता है, आई एम टू डेट लाइक दैट.
So even if she wants anything, then she would always refer to me, Archana, अगर ते दाखव ग जरा ते काय बसवलं होतं. So I would say very formal training of Kathak. Though I performed at the age of 3, I would say very systematic for जिसको बोलते हैं चोटी पकड़ के कान पकड़ के खींच के सिखाना. That started at the age of 6. That's how I would put it. Though I performed at the age of 3. But और फिर वहाँ से जो शुरुआत हुई, I still remember that she used to make it a point that before Papa comes back from the office कि बाबा याच्यात शिकून घे. So उसका वो कोशिश रहती थी कि फिर वो आने के बाद I don't want him to get irritated because my Baba had tremendous interest in music. संगीत नाटक वगैरह उनको बहुत पसंद थे. उनकी पसंदीदा सिंगर्स मतलब शोभा गुरटू, निर्मला अरुण, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर, ये उनकी पसंदीदा सिंगर्स थी. बट डांस से उनको कोई रुचि और लेना देना नहीं था. बट ही सपोर्टेड हिज वाइफ बिकॉज ही वॉज अ डेमोक्रेट, वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन. सो ही सपोर्टेड हर. बट सिंस माई मॉम वाज टू अवेयर ऑफ दैट, इसलिए वो कोशिश करती थी कि वो उनके आने से पहले खत्म कर दो, सीख के पहले पूरा कर दो. So Archana ji, tell us a little bit more about your शिक्षा with आशाताई. हां. आणि त्याच्यातलं काही एखादं थोडंसं तुम्हाला सांगता आलं, पढंत किंवा कविता किंवा करून दाखवता आलं तरी पण